ऑल राईट, वेलकम वेलकम वेलकम. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. सर्वांचं स्वागत आहे हे व्हॅल्यू सेशन मध्ये. जर काय तुम्ही मला व्यवस्थित ऐकू शकता, बघू शकता, प्लीज शो मी सम थम्स अप. शो मी थम्स अप इफ यू कॅन हिअर मी क्लिअरली. ओके, थँक्यू थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच फॉर युअर रिस्पॉन्स. थँक्यू सो मच फॉर युअर टाइम. तुमचं जे वेळ आहे खूप मूल्यवान आहे, पण हे एक तास जे आपण स्पेंड करणार आहोत त्याच्यामध्ये अगदी खूप व्यवस्थितपणे आपण एक गोष्टीमध्ये महारत हासिल करून घेणार आहोत. आणि ती गोष्टी काय आहे ते सांगायच्या आधी मला एक प्रश्न आहे. असे किती लोक आहेत ज्यांच्याकडे खूप प्रबल इच्छा आहे एका गोष्ट कॉन्कर करण्यासाठी? हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव गॉट अ गोल ॲट लिस्ट इन युअर लाईफ? कॅन यू रेज युअर हँड? Show me hands up. Okay. Okay, thank you so much for your response again. Thank you. आणि is it okay की मी हिंदी, इंग्लिश, मराठी तिन्ही भाषेमध्ये मिक्स मध्ये कम्युनिकेट करू? आर यू कम्फर्टेबल फॉर दिस? सर्वजण कम्फर्टेबल आहेत? येस. ओके, तर मी काय करणार आहोत आता, आपण एक सेशन मध्ये जाणार आहोत ज्याचं नाव आहे व्हॅल्यू क्रिएशन, ॲडिशन अँड इम्प्लिमेंटेशन. आता हे व्हॅल्यू काय आहे? तुमच्यापैकी किती लोक आहेत जे वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये व्हिजिट करतात आणि ते पाहतात की 7 व्हॅल्यूज किंवा 7 प्रिन्सिपल असं लिहिलेलं असतं? हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव सीन दॅट? ओके, वाय आय एम आस्किंग यू टू रिस्पॉन्ड? लिसन व्हेरी क्लोजली. मी आता ह्या एका तासात फक्त बोलणार नाही आहोत, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काही वैश्विक लॉ तुमच्याशी शेअर करणार आहोत. ती वैश्विक लॉ काय असते? व्हॉट आर द युनिव्हर्सल लॉ? आय एम एक्सपेक्टिंग सम रिस्पॉन्सेस. इफ यू आर लिसनिंग टू मी through Zoom call from your desk, you can type into the chat window what do you understand by universal law? वैश्विक नियम म्हणजे काय? Any answer. जो बोर्ड रूम में बैठे हुए हैं वो भी बता सकते हैं. What do you think the meaning of universal law? यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या है? एक क्विकेस्ट यूनिवर्सल लॉ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. वो पहला यूनिवर्सल लॉ ये है कि जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं आप रिजल्ट को ट्रिगर करते हैं. एंड दैट इज द वेरी रीजन I am requesting you all to start responding. Okay, so let it be the two-way communication. Do you get it? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पहला यूनिवर्सल लॉ ये कहा कि जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तब आप रिजल्ट को ट्रिगर करते हैं. आप में से यदि आपको रिजल्ट चाहिए, जो भी कार्य आप करते हैं आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही रिजल्ट पाहू इच्छित असाल तर प्लीज टाइप आर इनटू द चॅट विंडो और जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी आर फॉर रिजल्ट. कैन यू डू सो? सो इसका मतलब आपको ये जो यूनिवर्सल लॉ है वो समझा नहीं है. लेट मी रिपीट दैट. व्हेन यू रिस्पॉन्ड यू ट्रिगर द रिजल्ट. एंड हाउ डू यू डू दैट? You declare something. Okay, you declare something. And how do you declare? By speaking up out. Okay, while speaking out you declare. And the second universal law is when you declare gets designed towards the destination. जो आप वर्णन करते हैं वो वजूद में आने लगता है. तो आप किस तरीके से, कौन सी बात अपने दिल से वर्णन कर रहे हैं या दिमाग से वर्णन कर रहे हैं? थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू सो मच. आई वांट टू रियली अपलॉड फॉर यू फॉर कमिंग अहेड एंड टाइपिंग आर फॉर रिजल्ट. थैंक यू सो मच. सो दिस इज समथिंग टेक्स चेंज. अभी मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछने वाला हूं. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जी लोक लॉकडाऊनच्या अगोदर हे अनाउन्समेंट ऐकलात की आता आपण वर्क फ्रॉम होम करणार आहोत आणि तुम्हाला ते बरं वाटलं आणि नंतर तुम्हाला वाटलं हे चेंज काय मला जमत नाही आहे? इफ यू आर वन ऑफ देम प्लीज टाइप मी इनटू द चॅट विंडो. मी, प्लीज टाइप इनटू चॅट विंडो और जस्ट शो मी योर हैंड्स अप. आई वाज वन ऑफ देम. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्टी. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड करते हैं. अगेन रिमेंबर द वेरी फर्स्ट यूनिवर्सल लॉ. व्हेन यू रिस्पॉन्ड यू ट्रिगर द रिजल्ट. व्हाट इज द कीवर्ड?
result. Thank you so much, Neha, once again. And thank you so much in the boardroom, in the conference room where, I'm not sure your name, ma'am. Can you tell me your name? You are just communicating and responding and really triggering the result in your life. So in the conference room, may I ask your name, please? In the conference room. In the conference room, in front of diagonally, in fact, diagonally opposite to red bottle. Okay, I think conference. Yeah, could you please tell me your name? Apart from Neha, you're responding, you're communicating. You are on mute. You are on mute. Your Zoom is on mute. In fact, you can type into the chat window if anyone can, that will be fine. If Neha wants to chat in the window, her name, that will be fine as well. So fantastic. I'm understanding कि कुछ limitations हैं आपको convey करने में. So is it very much clear? The very first universal law? That is nothing but when you respond, you trigger to the result. And how many of you want result in your life? Raise your hand. Show me your hand. You can switch on your video or you can type into the chat window R. Thank you so much, Neha, for responding. A name as Prerna. Prerna, thank you so much for your responses. Thank you once again, Neha. And who else? So this is very, very serious. And you know what? अभी जो आप 1 hour मेरे साथ स्पेंड करने जा रहे हैं, थैंक यू सो मच रवि फॉर योर रिस्पॉन्स. आप जो 1 hour मेरे साथ स्पेंड करने जा रहे हैं, आई एम ब्रिंगिंग समथिंग इंटरनेशनल फॉर यू. वो कोई लोकल ट्रेनिंग नहीं है जहां पे मैं आऊंगा, बात करूंगा और चला जाऊंगा. ये जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है, इसकी वैल्यू डॉलर्स में है. इट्स मोर देन 2000 वर्थ रुपीज ऑफ वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस 1 hour, सर. ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तुम्ही सर्वांचं स्वागत आहे या 1 hourच्या ट्रेनिंग प्रोग्राम मध्ये. अँड काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर माय मराठी. माझं मराठी एवढं फ्लुएंट नाही आहे, तरी सुद्धा मला वाटतं मी व्यवस्थित कम्युनिकेट करू शकतो. सो मी तुम्हाला आता सांगितलं 2 युनिव्हर्सल लॉ. फर्स्ट, रिस्पॉन्ड का करायचंय? व्हेन यू रिस्पॉन्ड, यू ट्रिगर द रिझल्ट. अँड सेकेंड यूनिवर्सल लॉ इज व्हाट यू डिक्लेअर गेट्स डिझाइन. उसके पहले मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था की तुमच्यापैकी कुणाकडे खूप दमदार लक्ष आहे. लक्ष सर्वांकडे असतो. ओके, एक पशु जे आहे त्याच्याकडेही एक लक्ष असतो जगण्याचं, पण दमदार लक्ष सगळ्यांकडे नसतो. आणि ती दमदार लक्ष सर्वांचं पूर्ण पण होत नाही. कारण काय की त्याच्यापैकी एक गोष्ट कमी असतात आणि ती गोष्ट आपण बघणार आहोत. आणि ह्याच्या अगोदर मी तुम्हाला हेही विचारलं की किती लोक तुमच्यापैकी असे आहेत ज्यांनी पाहिलं आहे की काही कंपनीमध्ये 7 व्हॅल्यूज लिहिलेल्या असतात. So I invite some volunteer. Please tell me, what do you think that what will be the purpose of this 7 value? हे 7 व्हॅल्यू, 7 नियम वगैरे जे लिहिलेले असतात कंपनीमध्ये, त्याच्या मागे रिझन काय असणार? Yes, any answer. And all the answers are right and no answers are wrong. So any answer. I would appreciate your response. Think about it. Any answer. You have time. Okay, to love what you do. Second, growth. Thank you, Neha. Thank you, Ravi. Any another answer? Please share your answer. Would love to hear that. Okay, growth is another answer. Any another answer? You can type into the chat window. आप chat window में लिख सकते हैं या फिर अगर आप unmute करके बोल सकते हैं तो आप unmute करके बोल सकते हैं. Please let me know. So उनके पीछे reason क्या रहा होगा जो 7 नियम बताए जाते हैं इन कंपनीज में, ये 7 जो वैल्यूज होते हैं. ऑल राइट, मैं ऐसा समझ रहा हूं आपको मेरी भी आवाज क्लियर आ रही है और बैकग्राउंड में भी कुछ म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही है. अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है, प्लीज टाइप इनटू द चैट विंडो BC. BC मींस वॉइस क्लियर. प्लीज टाइप इनटू चैट विंडो BC. BC मींस वॉइस क्लियर. अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज क्लियर कट अपार्ट फ्रॉम दिस म्यूजिक. Okay, is it clear? Prerna, is it clear? Voice is clear? Or no? Okay, music will remain as is, but still I am requesting you to let me know if you can hear my voice still clearly.
Can you show me thumbs up? Okay, thank you so much. Thank you so much, BVG India. Thank you so much, Rohini. Thank you. Awesome for your response. इससे पहले कि हम इसके आंसर में जाएं, मैं आपको वन लाइन में ये बताऊंगा कि हमारे लिए जरूरी है 7 वैल्यूज, 7 प्रिंसिपल, और उसके साथ में एक चीज जरूरी है जिसे हम कहते हैं कोड ऑफ ऑनर. प्लीज टाइप इनटू द चैट विंडो CV or COH. Please type into the chat window code of honor COH into the chat window ताकि ये क्लियर हो जाए. Thank you so much Neha for your response. Thank you so much Ravi for your response. Thank you Ravi. So again, जो लोग response कर रहे हैं, thank you Srushti, thank you Rachna, thank you Babu, thank you, amazing. So अभी हम क्या करने वाले हैं? Is it okay? I'll quickly take a moment and tell you कि आप अभी थोड़ी देर में क्या क्या चीजें जानने वाले हैं, और काही सेकंडात मी माझं इंट्रो पण तुम्हाला देणार आहे. सो इज इट ओके इफ आई कैन टेक सम ऑफ द टाइम and tell you that please type Y into the chat window if it is okay, if you permit me, and I'll do and why I'm doing this. Please type into the chat window if you permit me, if you allow me. I'll quickly take few moments and tell about myself. Okay, you can show me like this. This is means Y. हे तुम्ही मला Y पण असंही दाखवू शकता. So can I have attention? This is something. And the third universal law I'm going to tell is what you appreciate appreciates you. आप जिस चीज की ओर ध्यान देते हैं वो चीज आपको भी ध्यान देता, आपकी ओर भी ध्यान देता है. यस, डिस्टर्बेंस आ रही है आवाजों की. ओके, आनंद सर, थैंक यू सो मच आनंद फॉर म्यूटिंग. यस. So now let me ask you this thing. Have you registered? तीसरा यूनिवर्सल लॉ आपने लिखा, what you appreciate appreciates you back. So जो भी आपके साथ हो रही, चाहे आप वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसे आपने अप्रिशिएट करना है. कुछ चीजें आपके साथ नहीं हो रही, आप उसे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो, क्योंकि उसके साथ चौथा यूनिवर्सल लॉ जुड़ा है जिसे कहते हैं what you resist that persists. Okay, and what you appreciate that expands in your life. कहने का अर्थ ये कि आप जिस चीज पे फोकस करोगे वो आपकी लाइफ में बढ़ेगा. बट इज इट ओके नाउ इफ वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट? जो भी वैल्यू के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उससे पहले आई विल टेक सम मोमेंट एंड टॉक अबाउट माई सेल्फ. प्लीज टाइप इनटू द चैट विंडो एंड इफ यू कैन सी दिस स्क्रीन, प्लीज टाइप इनटू द चैट विंडो why means yes. I would love to know your responses. Okay, thank you so much. Thank you so much, Neha. You are the leading. Thank you so much, Rohini. You are too. And Anjali, thank you. Babo, thank you so much. Thank you so much for your response. And I truly appreciate you for you taking time out. जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तुम्ही सर्व लोक busy आहात, तरी सुद्धा तुम्ही value करता है learning. How many of you love to learn a lot? Please type into the chat window LOL, means love to learn a lot. Okay, so thank you so much, Neha. Thank you. You love to learn a lot. Thank you Ankit. Thank you Babo. Thank you Reena. Thank you everyone. So Reena team, thank you so much. Devashish, thank you Rohini. So I genuinely appreciate because you have got a learning mindset. And second, let me ask you this thing before I introduce and talk about myself. आप में से ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितनी लोक आहात ज्यांना गिफ्ट आवडतो? सो जर तुम्हाला काय गिफ्ट आवडत असेल, I want you to type into the chat window ILG. Just type into the chat window ILG. And before that, as I said, that you need to declare. Okay, thank you so much Anjali, thank you so much Neha, thank you so much Prerna. Before we get into this all activity, let me quickly tell you, I come from IT corporate background. Okay, my name is Kumar Gaurav. I am scale up abundance coach. Okay, so in this scaling industry, when I am talking about scale up abundance coach, means what exactly I do. I personally work with individuals के साथ काम करता हूं, and
अगर आपकी लाइफ में रिकवरी एक इशू है, रिकवरी हो सकती है हेल्थ की, रिकवरी हो सकती है वेल्थ की, रिकवरी हो सकती है हार्मनी इन रिलेशनशिप की, सो इन सब को आप विद इन 24 आवर्स किस तरीके से उसे स्केल अप कर सकते हो, इस तरह के प्रोग्राम में करता हूं मैं। नेशनली इंटरनेशनली एटलीस्ट 11 इंटरनेशनल स्टेजेस पे बात कर चुका हूं। राइट में जो आप देख रहे हैं ये सारे मेरे इंटरनेशनल मेंटर्स हैं जिनसे मैंने ट्रेनिंग की है, एंड आई हैव स्पेंड लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स एंड रुपीज एंड आई गॉट सर्टिफाइड फ्रॉम देम। इनमें से कुछ लोगों को आप जानते होंगे, किन्हीं लोगों को आप नहीं जानते होंगे। जो इंडिया के रिनाउंड स्टेजेस हैं, आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू सर्व ओवर देयर। But these all started why? Because recently in 2019, जब ये मेरा प्रोफेशन नहीं था, I was serving in IT industry. One person in my society ended his life, and I saw a bloodshed on the floor when he jumped from the 8th floor. That was the night I could not sleep. मैंने मंथन किया उस वक्त कि ये इस तरह के न्यूज कंटिन्यूअस 2019 में मुझे मिलते जा रहे थे, एंड आई वाज नोइंग समथिंग बिकॉज 17 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, यू डेवलप सम इश्यूज विद योर हेल्थ, समटाइम विद रिलेशनशिप एज वेल, एवरीथिंग वाज सफरिंग. I decided to correct them. It took me a long journey, complete training, और फिर उसके बाद में मैंने एक फॉर्मूला इजाद किया जिसका नाम है अबंडेंस फ्रेमवर्क, और उसके थ्रू आज तक मैंने 4 महीने के अंदर 2020 में 8,000 से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स लोगों को सर्व किया और उन्होंने 24 आवर्स में रिजल्ट देखा. सो दिस इज समथिंग आई वांट यू टू एक्सपीरियंस एज वेल, बट दैट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट. जब इस तरह की बिल्कुल हाई क्लास चीजें आपको मिल रही हैं जिसका एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, तो उसमें आपकी कमिटमेंट लेवल, आपका अटेंशन कैसा होना चाहिए. सो आई वांट यू टू डू अ डिक्लेरेशन, एंड डिक्लेरेशन किस तरीके से हम करने वाले हैं. आई वांट एवरीवन यू टू स्टैंड ऑन योर फीट. आप अपनी जगह पे प्लीज खड़े हो जाएं. ओके, प्लीज खड़े हो जाएं आप सभी अपनी जगह पर. यू सी योर हैंड. ओके, लुक एट इन योर हैंड, keep it at your heart, keep it at your heart. Okay, and close your eyes and tell yourself, close your eyes and tell yourself aloud, I commit to my successful result, I commit to my successful result. And loud, once again aloud, I commit to my successful result. And turn to someone and give them high five, telling that I have an awesome result. You can give me a high five on the camera and tell me I have an awesome result. Give someone high five, guys. Give someone high fives. Okay, give to each other. अगर आप एक साथ हैं, give to each other and tell I have an awesome result. Give yourself high five. Yes, and say I have an awesome result. So I couldn't hear that, but I believe that you have done so. Again, remember this universal law. What you declare gets designed. So be seated. Please be seated. Take your seat. Thank you so much for doing so. Can we have a round of applause for yourself? Because what you appreciate, that appreciates you back. Can we all have a round of applause, sir? Sir and madam. So you can just keep your hanky aside. Can you really appreciate yourself? See, the thing is what, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है. ओके, एंड और बहुत कड़ी परिश्रम आप किए जा रहे हैं और आपको लगता है क्या मुझे इतना ही कड़ा मेहनत करना है और एंड में रिजल्ट के लिए मुझे घिसते चलना है, मतलब मुझे ठोकरें खाते रहनी है और फिर उसके बाद बहुत मेहनत करके पसीने बहा के फिर मेरे को रिजल्ट देखना है. अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो वैसा ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप वहां पे अप्रिशिएट नहीं करते हैं. हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो गृहिणियों को जानते हैं जो बिल्कुल एंड में खाना खाती हैं? दे डोंट अप्रिशिएट. कैन यू रिलेट विद मी? They don't appreciate their effort. So we need to learn to appreciate each other. We need to learn appreciate our effort, and for that you need to celebrate. So are you ready for celebration?
If you are ready for celebration, please type into chat window C for celebration. Please type into chat window C for celebration. Thank you so much, Prerna. Thank you so much, Babo. Thank you for more responses coming up. Okay, thank you so much again, Ankit, and thank you so much, Babo. And thank you so much for all your responses. Remember the very first universal law: when you respond, you trigger the result. Thank you so much, Rachana. Thank you so much, Ankit. सो आपने ऐसे कई लोगों को देखा है कि वो गृहिणियां हर बार दुखी रहती हैं. क्यों दुखी रहती हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू में से एक चीज मिसिंग होती है. वो मिसिंग होती है सेलिब्रेट एंड अप्रिशिएट देमसेल्फ. त्यांच्यामधून हे सेलिब्रेशन जे आहे, प्रत्येक गोष्ट आपण साजरा करू शकतो, हे मिसिंग असतं. तर जर का तुम्ही रेडी आहात सेलिब्रेशन करण्यासाठी, आय रिक्वेस्ट यू टू टर्न टू समवन अँड गिव्ह देम हाय फाय अँड टेल दिस विथ एनर्जी, आय सेलिब्रेट एव्हरी टाइम, आय सेलिब्रेट एव्हरी टाइम. प्लीज टर्न टू समवन अँड गिव्ह देम हाय फाय अँड से आय सेलिब्रेट एव्हरी टाइम. यू कॅन गिव्ह मी हाय फाय, camera high five, and say I celebrate every time. Prerna, you can also interact and you can also give high five. Thank you so much for all your responses. Thank you. So when you declare, you get designed, and now there is a time I want you to think of one goal. एक ऐसा गोल जो आप अचीव करना ही चाहते हैं, जिसके अलावा आप रह नहीं सकते हैं. मतलब किसी भी समय अगर आपको मौका दिया जाय, तुम्हाला जर वेळ भेटला तर तुम्ही काहीही कार्य करणार नाही, पण त्याच्या मागे तुम्ही जाणार आहे. ठीक आहे, त्याच्याबद्दल तुम्ही विचार करा आणि ती तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून घ्या, किंवा तुमच्याकडे जर नोट पॅड असेल लॅपटॉप मध्ये, प्लीज टाइप इन ओव्हर देअर. ओके, प्लीज टाइप इन. थँक यू सो मच करण. हाय फाय टू यू टू. ओके, so yes, please type into the chat window. And thank you so much for spotlighting. So yeah, so another thing is that I want you to do is this. Okay, if you are taken a note of your goal, I want you to ponder upon. मैं चाहता हूं कि 7 ऐसी चीजें आप अभी के अभी लिखें, और मुझे चाहिए आपकी 100% एनर्जी. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आप कार्य कर रहे हैं, तो आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए भी कर रहे हैं. तो उससे रिलेटेड मैं चौथा युनिव्हर्सल लॉ आपको बता रहा हूं. आणि ती युनिव्हर्सल लॉ ऐकल्यानंतर जर का तुम्ही एनर्जी पुट इन केले नाही, तर तुमचे कोणीही हेल्प करू शकत नाही. ओके, so how many of you want lot of money in your life? Please type into the chat window M for money. Lot of money, and be honest. Okay, thank you so much Neha, thank you so much Ankit, thank you so much Anjali, thank you so much Babo, thank you so much Karan. Thank you for your honesty, and I would love to clap for you. Can you also clap for the people who are responding? Thank you so much Dipesh. Can you please clap for them? Let's appreciate them, because they are honest, and this is something expensive thing you are not going to get ever. So if that is the thing, let me tell you another universal law. Big money needs big energy. What does it need? Please type into the chat window E for energy. And अगर आप छोटी सी ट्रेनिंग में अपनी एनर्जी पुट अप नहीं कर सकते हैं, how do you expect the money coming to you? That's the another universal law. Big money needs big energy. So I would encourage all of you to put up the energy in this training. Thank you so much for your responses. Shrushti, thank you so much. Dipesh, thank you so much. Anjali, Devashish, and Anand, and Vikram, and Prerna, and Karan, and Vaibhav. अब तक मैंने आपको 5 यूनिवर्सल लॉ बताए हैं, and if you have felt wow about it, please type into chat window WOW means wow. If you are honestly felt wow about it, or show me these 3 fingers, it means really wow. Thank you so much for your honest typing. Thank you Anand, thank you Karan, thank you Babo, thank you Srushti, thank you all of you. So now what I want you to do, ये जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कितने लोगों को गिफ्ट पसंद है, तो इस ट्रेनिंग के अंत तक बने रहें, एंड आई विल बी गिविंग यू सम अमेजिंग वे टू हैव द फ्री गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू. ओके, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इस ट्रेनिंग के स्टार्ट में, बट आपने उसका जवाब नहीं दिया. सिर्फ 3 रिस्पॉन्सेज आए, बट आई स्टिल अप्रिशिएट देम. अब मैं क्या चाहता हूं, आपको 2 चीजें करनी है. आपको नोटपैड और पेन लेना है, एंड सीरियसली लिखना है कि उस गोल को अचीव करने के लिए कम से कम 10 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं कर गुजरूंगा.
जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किया, जैसे किसी ने मुझे बोला वर्ल्ड टूर करना मेरा बर्निंग डिजायर है, किसी ने कहा कंटिन्यूअस लर्निंग मेरी बर्निंग डिजायर है, किसी ने कहा कि टू लर्न एंड ग्रो वो मेरी बर्निंग डिजायर है, किसी ने कहा कि मुझे मेरे पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर पर लेकर जाना है, वो मेरी बर्निंग डिजायर है, और किसी ने ये भी कहा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का, वो मेरी बर्निंग डिजायर है। सो वॉट एवर द रीजन कुड बी, कौन सी ऐसी चीज, एक चीज है जो उसे रोक रही है, वो आपके नोटपैड में लिखना है, और कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं जो आप कर गुजरेंगे उन चीजों को करने के लिए। लेट मी रिपीट दिस इन इंग्लिश, हाउ मेनी 7 थिंग्स आर देयर दैट यू रियली वांट टू डू इट इन योर लाइफ टू अचीव योर गोल, एंड द वन थिंग विच इज स्टॉपिंग यू, लेट मी रिपीट दिस इन मराठी, असे 7 गोष्टींचे नाव लिहून घ्यायचे तुम्ही, जे तुम्ही करणारच आहात तुमचं लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी, आणि एक अशी गोष्टी जे तुम्हाला म्हणजे रोखते ते पूर्ण करण्यासाठी, जे तुम्हाला म्हणजे इनिशिएटिव्ह घेऊ देत नाहीये ते पूर्ण करण्यासाठी. सो आर यू क्लिअर विथ द एक्सरसाइज व्हॉट यू आर गोइंग टू राईट? 7 थिंग्स which you have understood that this is very, very important for me to achieve. And let me tell you one most important thing. एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी. ओके, आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा, लेकिन ये एक्सरसाइज करने के पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी. ही इज अ डॉक्टर इन अ पर्सनल डेवलपमेंट स्पेस, एंड ही सेज दैट यदि आपका लक्ष्य आप तक सीमित है तो आप अपने परिवार के बारे में सोचिए, वो पूर्ण होगा ही. यदि आपका लक्ष्य आपके परिवार तक सीमित है तो आप अपने समाज के बारे में सोचिए, वो लक्ष्य पूर्ण होगा ही. और यदि आपका लक्ष्य आपके समाज तक सीमित है तो आप अपने जिले के बारे में, अपने शहर के बारे में सोचिए, वो लक्ष्य पूर्ण होगा ही. यदि आपका लक्ष्य सीमित है आपके शहर तक तो आप अपने राज्य के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, तो आपके शहर का लक्ष्य पूर्ण होगा. यदि आप अपने शहर का, राज्य का लक्ष्य पूर्ण करना चाहते हैं, आपको अपने देश के बारे में सोचना होगा. यदि आप अपने देश का लक्ष्य पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको इस पूर्ण विश्व के बारे में सोचना होगा. और यदि आप वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूर्ण ब्रह्मांड के बारे में सोचना पड़ेगा. इसे इंग्लिश में कहते हैं हैविंग एन एस्ट्रोनॉमिकल गोल. सो इफ यू हैव एस्ट्रोनॉमिकल गोल, जो भी छोटे छोटे गोल्स हैं वो पूर्ण होंगे ही, लेकिन उस गोल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 7 चीजें आपको लिखनी है जो आप कर गुजरेंगे. तो आपका समय शुरू होता है अब. आपके पास में 10 मिनट का समय है जिसमें आपको मंथन करते हुए बातें लिखनी है, और ये मंथन आपके जीवन में मंगलकारी सिद्ध होने वाला है. ओके, सो ये इसलिए इसे मंगल मंथन कहा जा रहा है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आर यू ऑल रेडी? एनी डाउट ऑन दिस? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. यदि कोई प्रश्न है, और अगर ये क्लियर है, यदि ये क्लियर है, प्लीज टाइप इनटू द चैट विंडो IMC means I am clear. Please type into chat window IMC if it is clear. The exercise is clear to you. Please type into chat window. Thank you so much, Babo. Thank you so much, Prerna. Thank you so much. So your time is starting now. I'm going to have a sit and I'm going to also write about it. Okay? Go ahead. Pen and paper near you. जब भी आपका लिखकर हो जाए आप चैट विंडो में डी लिख सकते हैं. डी मीन्स डन, और डी मीन्स डन डन डन.
Please type D once you are done. You have got 10 seconds left. 10 सेकेंड आपके पास हैं. And start finishing up. 2 seconds to go. 1, 2, and start finishing it up. Start finishing it up. Thank you so much. So please stop wherever you are. Please stop. Okay, and pay very close attention over here. अब ये 7 जो आपने बातें निकाली उसमें से एक आधा एग्जाम्पल जो आपको लगता है कि आई कैन शेयर, प्लीज टाइप इनटू द चैट विंडो व्हिच यू थिंक दैट वन थिंग दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू डू. मेरे लिए एक जो जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था एंड आई वाज लर्निंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी. सो ही सेड टेल मी वन थिंग जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते. और उस वक्त मैं लर्निंग में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था कि मैंने डिसाइड किया कि एक पण असं दिवस जाणार नाही ज्या दिवशी मी काय शिकणार नसेल. ओके, सो लर्निंग वॉज द वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर मी कि उससे करे बगैर मैं रह ही नहीं सकता हूं. एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, लर्निंग में मैं एकेडमिक लर्निंग की बात नहीं कर रहा हूं. लर्निंग में जैसे आपने 5 यूनिवर्सल लॉ ऐसे सीखे जिसने आपको बाध्य किया वाव बताने पर, ऐसे कम से कम 780 जो यूनिवर्सल लॉ हैं, जब उसे आप जान जाएंगे तो आपके काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा. बिल्कुल 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 हमेशा के लिए बदल जाएगा. और इसके लिए यह जरूरी है कि जो एक्सरसाइज आपको दी है उस पर फोकस करना. सो टेल मी वन थिंग जो आपको लगता है उस वो किए बगैर तो आप रह ही नहीं सकते. की ही जे गोष्टी आहे, पॉइंट नंबर 3 जे आपण लिहिला आहोत चॅट विंडो मध्ये, की हे तुम्ही करणारच आहात. So please type into the chat window, what do you think that is one thing you have written in your note? Please let it come. You can unmute yourself and you can talk about it. So what was that one thing? It could be learning, it could be dancing, it could be spending time with family, it could be working on your fitness, it could be anything. Okay, please type into the chat window, remembering the one thing, the very first universal law. When you respond, you trigger the result in your life. When you declare, you design the destination in your life. So that is the second universal law. And third, अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे इस वक्त, तो मैं आपके सामने अगला यूनिवर्सल लॉ बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे. और वो यूनिवर्सल लॉ कहता है कि How you do anything is how you do everything. आप जिस तरीके से अपने लाइफ में एक कार्य को अंजाम देते हैं, उसी तरीके से आपके सारे कार्य आपके जीवन में पूर्ण होते हैं. Now look back in your life. आप अपने लाइफ में पीछे की ओर टर्न होकर के देखिए और देखिए, यदि आप बुक पढ़ते हैं तो बुक को क्या आप आधे में छोड़ देते हैं? यदि आप आधे में छोड़ देते हैं तो हर जीवन के हर क्षेत्र में आपका हर कार्य आधे में ही लटका हुआ दिखाई देगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं. क्योंकि आप जिस तरीके से एक कार्य को अंजाम देते हैं उसी तरीके से आपके सारे कार्य फलित होते हैं. दैट इज अनदर यूनिवर्सल लॉ. सो नाउ टेल मी वन थिंग विच यू हैव रिटन यू थिंक इज समथिंग डायनेमिक यू आर गोइंग टू डू बाय हुक एंड क्रुक. सो आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर योर आंसर. पहले आपने ये एक्सरसाइज किया क्या? आप ये एक्सरसाइज कर पाए? प्लीज टाइप इन द चैट विंडो वाई फॉर यस इफ यू हैव डन द एक्सरसाइज
and it is okay if you don't want to share. Thank you so much, Prerna. So any other people who could do the exercise? If you have not done, I'm going to tell you. So कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं. मैं बात करने वाला हूं मेरी एक फ्रेंड की, Rupa Patil. Okay, she is another coach from one of my friend, and she is in Bangalore. So उसने अपने घर के लिए कुछ वैल्यूज डिसाइड किए. बोले कि जब हमारे घर में कुछ बातें होंगी तो हम इन चीजों पे काम करने ही वाले हैं. तो उन्होंने अपने बच्चे के साथ क्या नियम ऐसे बनाए कि हम में से कुछ भी हो जाए तो कोई शाउट करके बात नहीं करेगा. ओके, तो जब भी उसकी मम्मी उसके ऊपर एंग्री होती है तो उसका नाम है, बच्चे का नाम है नील. सो नील सेज, ममा बट ये तो हमारे कोर वैल्यूज में नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू शाउट. एंड द मोमेंट दीज 7 आइटम्स कम, हमने उसका नाम दिया है कोर वैल्यूज. अगर ये कोर वैल्यू नहीं है तो आपका लक्ष्य प्रोटेक्ट नहीं होगा, और अगर आपका लक्ष्य प्रोटेक्ट नहीं होगा तो वो लक्ष्य अचीव नहीं होगा. आपके पास अगर आईफोन है तो आईफोन को आप प्रोटेक्ट कर पाते हैं. अगर आप प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर में शील्ड लगाते हैं तो ही आपका आईफोन या आपका स्मार्टफोन ज्यादा समय तक चल पाएगा, इसलिए आप उसे शील्ड लगाते हैं. ये एक छोटा सा एग्जांपल था. लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक अनदर एग्जांपल है जो आपके वैल्यू में रिसाइड हो सकती है. उसी तरीके से मैंने आपको दिया था 7 वैल्यूज जो आपको लिखने थे. अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि आपको समय देना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो मैं करना ही चाहता हूं मेरे लाइफ में, या फिर मेरे ऑफिस में, या फिर मेरे एनर्जी में, या फिर मेरे गोल को अचीव करने में मैं उसे इंक्लूड करना चाहता हूं. असे किती लोक आहे ज्यांना वाटतंय की अजून मंथन करायला पाहिजे ह्या 7 गोष्टींवर, आणि ती 7 गोष्टी तुम्ही स्वतःहून आपल्या मंथन मधून तुम्ही काढून घेऊ शकता, म्हणून तुम्हाला वेळ दिला गेला होता. आणि माणसं एवढं लेझी आहेत, माणसं नाही लेझी आहेत. हु इज लेझी? योर ब्रेन इज लेझी, बिकॉज ब्रेन कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहता है. और ये ब्रेन के पास 8 टांगे हैं, 8 टांगे हैं जो हर वक्त कुछ ना कुछ अनुमान लगाता रहता है. तो किस तरीके से अनुमान लगाता है उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, छोटी सी स्टोरी. आप इमेजिन करें कि आप फिर से बच्चे हो चुके हैं, और बच्चे होने के बावजूद आपको यह कहा गया है कि आप 6ठी कक्षा में है या 5वीं कक्षा में है, और आपको बताते हैं क्लास टीचर आके, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, और सभी तालियां बजाते हैं, बोलते हैं वाह 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 वाह. तो गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि हम लोग एक नए चैप्टर लर्न करने वाले हैं हिस्ट्री में. तो फिर उसके बाद सब बच्चे करते हैं अरे अरे, सो ये क्या बोल दिया गुड न्यूज के अगेंस्ट में. फिर उसके बाद टीचर बोलते हैं ये यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती है. गुड न्यूज ये है कि हम ये हिस्ट्री का चैप्टर एक पिकनिक में लर्न करने वाले हैं. फिर से सारे बच्चे बोलते हैं वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बात है. बट वो बोलते हैं लेकिन जो हम पिकनिक करने वाले हैं उन सब के लिए 1500 रुपए आपको कंट्रीब्यूशन लेकर के आना है. तो फिर सारे बच्चे बोलते हैं हे भगवान, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, अरे अरे ये क्या हो गया. फिर उसके बाद टीचर बोलते हैं 1 मिनट, यहाँ पे न्यूज खत्म नहीं हुई है, वो 1500 रुपए लाने हैं, लेकिन ये 1500 रुपए आपको कहां से लेकर आने हैं. तो इसके लिए हमारे पास में एक यूनिट आ रही है, एक एनजीओ की, जो आपको एक एक्सरसाइज देने वाली है, और एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद उनसे 1500 रुपए लेकर आपको आने हैं. फिर से सब तालियां बजाते हैं और बोलते हैं अरे वाह वाह क्या बात है. फिर बोलते हैं कि इतना ही नहीं, ये होने वाला है जून की कड़कती धूप में. सिर्फ सारे बच्चे फिर दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं अरे अरे कैसे जाएंगे. बट आप ये पैटर्न देख रहे हैं क्या? हर एक मोमेंट पे या तो ब्रेन जो चीजें उसे पसंद है वो करने के लिए कितना इच्छुक हो जाता है, और जो उसे पसंद नहीं है उसके लिए उसे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, वो कभी करना नहीं चाहता है. इसी तरीके से आपके जो कोड ऑफ ऑनर्स हैं, आपके जो कोर वैल्यूज हैं, उससे लिखने के लिए पहले आपको अपने ब्रेन से बातचीत करनी पड़ेगी, क्या ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता है. वरना ये जो 8 टांगे हैं जिसपे ये आपका ब्रेन सर्वाइवल माइंड जिंदा है, उसे दिखती है अपनी मौत.
ओके और चाहे छोटा सा भी क्यों ना हो, जब आपको कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो इनिशियली आप कंफर्ट जोन से बाहर गए कि अरे वहां पे इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा, मेरे पास इतना फास्ट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फिर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा. नाउ यू आर यूज्ड टू ऑफ इट. ओके फिर से आपको बोला गया नाउ थिंग्स आर अनलॉक्ड एंड यू नीड टू कम टू ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम देयर. अगेन योर ब्रेन वेंट इनटू सर्वाइवल मोड एंड इट डज नॉट वांट यू टू वर्क फ्रॉम योर ऑफिस. ओके क्यों? क्योंकि हर वक्त चेंज 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 एंड चेंज एंड चेंज. Change is there and every time your brain does not want to die. और यही एक वजह है जिसके लिए वो अपना लक्ष्य क्रिएट नहीं कर पा रहा है. और अगर लक्ष्य क्रिएटेड है तो उससे वो प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है. 7 ऐसी चीजें जो आप करना ही चाहेंगे अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, वो ये चीजों को लिख नहीं पा रहा है. या फिर जब आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो उसके बारे में आपका मन क्या कमेंट करना चाहता है, आपका माइंड, आपका ब्रेन, अरे ये तो मैंने कहीं सुना है, अरे इसका रिलेशन तो इससे है, अरे ये फला फला स्पीकर भी ऐसा ही बोल रहा था. Every time it is comparing. Why? Because it wants to live every single moment on that pride of that I know. अभी बहुत ही छोटा समय है, 1 घंटे का समय है, इसलिए कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वरना बताने के लिए तो भरपूर है. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं? तो अगेन आपके पास में अगला 5 मिनट है जहां पे आपको यह डिसाइड करना है कि ऐसे कौन से 7 चीजें हैं जो आप अपने लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए करना ही चाहते हैं और वो बनेंगे आपके 7 कोर वैल्यूज. तो पहला जो स्टेप हमने किया वो था रॉ राइटिंग. म्हणजे जे काय आपलं मनात आहे ते आपण डंप करणार आहोत. ओके ते आपण डंप केलेलं आहे. सेकंड काय होतो, अंडरस्टँडिंग येते. अंडरस्टँडिंग म्हणजे असं आहे का, मग त्यावेळेला तुम्ही डिसाईड करता की जर ह्याच्या पुढे जर मला वेळ भेटलं तर मी हे 7 गोष्टी तर करणारच आहेत. आणि त्यावेळेला तुम्ही रिफाइंड कोड ऑफ ऑनर तुम्ही त्यावेळेला टाईप करता. अँड अगेन यू हॅव गॉट another 5 minutes to write 7 such things that you are going to implement in your life and include in your life. And when your time starts, let me tell you something. हर वक्त जो ब्रेन आपका अज्यूम कर रहा है, अनुमान लगा रहा है, तो उसे आपको यह बताना है कि इफ यू वांट टू इंक्लूड समथिंग बिग इन योर लाइफ, नेवर एवर अज्यूम स्मॉल इन योर लाइफ. सो आपको क्या करना है कि जब भी आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, मन आपको अनुमान लगा के वहीं पे स्टॉप करना चाहता है. और जब आप उसको पुश करते हैं तो वहां से क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है और वहां से असली जूस क्रिएट होना शुरू करता है. सो लेट्स एक्सपीरियंस इट टुगेदर. हैव यू अंडरस्टूड द एक्सरसाइज? इफ यू हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज, please type into the chat window why means I have understood, or just type into chat window you means I understand. Please type into the chat window you if you have understood the exercise. Please type in the chat window. Come on guys, come on, let's energy up. So I want you to once again stand up on your feet. Please stand up on your feet. Please stand up on your feet. Okay, thank you so much. Come on everyone, please stand up on your feet everyone. Okay, now I want you to again declare a new thing. Show your palm in the camera and turn it to your heart. Show first in the camera your right palm, okay, and turn it to your heart and close your eyes and repeat along with me and tell, I have high core values. I have high core values. Close your eyes and tell, I have high core values. Twice aloud, I have high core values. And open your eyes and turn to someone and tell that, I am awesome achiever. I am awesome achiever. Give someone high five. Give someone high five. Turn to someone, give high five and say, I am awesome achiever. Give me camera high five and say, I am awesome achiever. Okay, give me camera high five and say, I am awesome achiever. Come on, everyone. Energy, remember the universal law for energy. Big money needs big energy, or for that you need to have a big learning. So learning curve has to be big. So if you are done, let me ask you once again, apart from prerna, how many of you have understood the exercise right now? अगले 5 मिनट सिर्फ आपको देने हैं ये राइट करने के लिए कि
इस बिग मनी का जो भी टारगेट है या फिर वर्ल्ड टूर का जो भी टारगेट है उसे अचीव करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए, ह्या स्वप्नाला मी पूर्णपणे साकार करण्यासाठी हे 7 गोष्टी माझ्याकडे तर ठेवणारा साथ आहे आणि ही 7 गोष्ट मी करणारच आहे. ठीक है सर, हे जर क्लियर असेल प्लीज टाइप इन चॅट विंडो सी फॉर क्लॅरिटी. प्लीज टाइप इन चॅट विंडो सी. Come on, guys, come on. When you respond, you trigger the result. Remember. And if you don't appreciate, that does not appreciate you back. आप अगर इन चीजों को महत्व नहीं देते हैं तो ये चीजें आपको महत्व नहीं देती हैं. अगर ये युनिव्हर्सल लॉ जानने के बावजूद हे सर्व माहिती झाल्यानंतरही जर तुम्ही काय पार्टिसिपेट नसल करत, तुम्ही तुमच्या हे युनिव्हर्सल लॉ रिसीव करण्यासाठी ते तुमच्यापर्यंत पोहोचणारच नाही. ठीक है. अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं, थैंक यू सो मच प्रेरणा एंड फॉर टाइपिंग. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, इज द एक्सरसाइज क्लियर गाइज? इट्स नॉट क्लियर? डू यू वांट मी टू रिपीट एवरीथिंग? Please type into the chat window C if it is clear, and anyone is not clear. So can you unmute because I am not getting any responses if I am audible? Okay, Rohini, Vikram, BBG India, everyone, if you are not clear, please type into chat window NC. How many of you are not clear? Please type into chat window NC for not clear. Okay, आप clear हैं या नहीं clear हैं? How will I get to know? Am I audible to you, everyone, and visible to you? Can anyone answer me, please? No responses in the chat and no responses. Am I really audible? Because I started doubting myself. If I am I audible to you all? Yes, sir, you're audible. Thank you so much for your answer. If I am audible, I want you to type into the chat window C for clear. The exercise for next 5 minutes is this, that 7 things you need to identify that you want to do by hook and crook in your life. And this time you don't have to share. Thank you so much, Rohini, for sharing this honestly. Thank you so much for your honest response. So everyone is clear. Now your time once again start, and I'm not going to give you more 5 minutes. I'm going to give you only 3 minutes. Ready for this? Please type in the chat window R for ready. And how many of you are ready? Show me your hand. And how many of you are not? Thank you so much. Thank you so much for raised hands. And those who are not, please raise your hand. Okay. So those who are confused that I'm ready or not, even you don't know. So remember the another universal law. How you do anything is how you do everything. Thank you so much, Ankit, and Rohini and everyone. So your time starts now. Please thank you so much, Anjali. Please start writing these 7 core values. You have not paid anything for this. Okay, it is arranged for on behalf of your company. You must appreciate your company because such an expensive training they have brought for you, and how much you should be appreciating their effort. Okay, so how much deeply you should participate. Okay, so your time starts now. You will hear the music soon and you need to participate now. Okay, so go ahead and your time starts now. Come on. Only 3 minutes. So it is 5:55. I'm going to stop at 5:57. Please start writing again. ब्रेन फिर से अनकंफर्टेबल फील करता है जब उसे वही कार्य रिपीट करने को बोला जाता है, बिकॉज इट फील्स लाइक ही इज डाइंग. बट व्हेन यू रिपीट इट, दैट टाइम यू ट्रिगर द क्रिएटिविटी. सो कंटिन्यू टू write in your notepad, please. Your time has started. Don't wait for music. You can still continue.
7 things which you think that you are going to do by hook or crook to achieve your goal. Kindly do participate, guys. If you cannot do it, please do not disturb others. One more minute to go. Okay, start wrapping up. Okay. Now tell me how many of you think that you have got little bit of clarity. आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि आप में थोडी बहुत क्लॅरिटी आहे. किती लोक असे आहेत ज्यांना असं वाटतंय की आता मला काय करायचं हे स्पष्टपणे दिसतो आहे. ओके, सो प्लीज टाइप इनटू द चॅट विंडो C for clarity. Please type into chat window CL for clarity. Thank you so much, Prerna. Anyone else? थोड़ा तो भी इस 1 घंटे में, because 1 hour is not really sufficient, right? इस 1 घंटे में आपको थोड़ी तो क्लैरिटी आई है. 1 घंटे में से आधा घंटा कॉन्टेक्स्ट आपको बताने में जाता है और बाकी के आधे घंटे में आपकी एक्सरसाइज कितनी होती है वो महत्वपूर्ण है. So apart from Prerna, who have done it? Who have got the clarity? Only Prerna has done? Okay, so if you remember that you are going to get a gift, then this is going to be for them who have interacted a lot. Okay, this was the surprise. Okay, so yes, who else? So conference room में बैठे हुए कितने ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी तो भी clarity आई है? If you cannot chat, can you show you raise your hand? Thank you so much. Almost everyone is there. Thank you so much. And people who are just through Zoom window, if you can just type into chat window if you are clear. Vikram, Rohini, BVG, Dipesh, if you are clear, please type into chat window clear, C for clarity, NC for not clear. Sanjay, please type into chat window if you are clear. Okay, somehow it is not responding. Okay, so please type into chat window. Ankit, Devashish, Srushti. Okay, thank you so much for your answers. And yes, तो मैं अभी क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं आपको लिंक दे रहा हूं. इस लिंक के थ्रू आपको करना क्या है? Okay, somehow I was not getting the response from Zoom. I was stuck. So yes, अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको एक लिंक देने जा रहा हूं और इस लिंक के थ्रू आपको एक फॉर्म भरना है. उस फॉर्म में आपको क्लेम करना है अपना फ्री गिफ्ट. थैंक यू सो मच. यहां पे मैं स्टॉप करूंगा बिकॉज अगर ये 7 कोर प्रिंसिपल आपने अपने पूरे जीवन भर फॉलो किए
So trust me, your goal is going to get achieved. Now, the secret is that how to create the goal, how to have the burning desire, and how to remain focused onto that. ये सब चीजें एक different topic है, वो अलग तरह के ट्रेनिंग में कवर किए जाते हैं. बट अगर आपके पास ये 7 प्रिंसिपल या 7 व्हॅल्यूज आपकी लाईफ से रिलेटेड आज क्रिएट हो गए हैं, जर का हे क्रिएट झालेले आहेत, तर लेट मी टेल यू अ बिग 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 कॉन्ग्रॅच्युलेशन फॉर यू. And on this note, I want you to give a lot of clap, a round of applause for yourself. Come on in, please clap for yourself. You can just wave your hand, clap for each other, because you remember what you appreciate, that appreciates you back. Thank you everyone, thank you so much. And in the chat window, I am going to give you the form which you are going to fill, and by filling that, what you are going to do is that you are going to claim your free gift. So let me bring that for you, and here it is. Just give me a moment. I'm just copying the link to paste it into the Zoom window. Okay, so I think I have done it, and here you go with, okay. So let me load that link for you first. Okay. Okay, it has gone to single participant. Yes. So we have come to the end now, and this is the link. Please save this link. You have to fill it up, and you have to come back. Thank you so much for your time. I truly appreciate. I am done, and we will talk again once you fill this form and you can claim your free gift. Okay. Thank you so much for your responses. So yes, over to you, Prerna. I am totally done. I am muting myself. If you have anything, otherwise we can wrap up. Prerna, do you want to just have a closing remarks, talk something? So I am done with this trainings, tiny training. Gaurav, am I audible to you? Yes, now you are audible. You were just echoing, but yeah. Yeah. So I just wanted to say thank you. I think there is a disturbance. That's fine. Gaurav? Yes. I'll do one thing. I'll just give you a call because I think there's a mic issue. No problem. You can go on mute, Prerna. So yes, thank you so much for your appreciation, your participation. And this is a small token of appreciation in terms of, clap for you. You had been a wonderful participant, and I understand. मैं ये समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा challenging रहा होगा कि connecting remotely. I'll be coming down to your premises, and trust me, I'm going to make you move. Okay, if I can make you do something, I can make you move to achieve your result. Okay, thank you so much for your time. Bye bye, take care everyone. I'm just stopping it. Thank you.